पता नहीं क्यों ये आ रहा है। Okay, our next chapter is basic computer organization and design. And listen one thing, students. In this, will discuss we will discuss a processor of very old. ओके ये नहीं कि हम आजकल का जो प्रोसेसर वो डिस्कस कर रहे हैं। आजकल जो भी वी विल डिस्कस इन दिस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, तो ये हमारा अप टू डेट करंटली नहीं होगा, ये एक बेसिक होगा जो हम पहले यूज करते थे। ओके, सो वी विल डिस्कस very old processor and various components of that processor. Okay, in journal, these topics are in journal. So basically we will discuss about assembly language processor. Assembly language के related हम सारा discuss करेंगे। Okay, जो भी discuss करेंगे। Now remember one thing in this. Firstly, we have discussed in last lecture, that is instruction code. Instruction code. What is instruction code? Basically, it is a group of bits which instruct the computer to perform a particular operation. Okay, it is a group of bits which instruct the computer to perform a particular operation. Okay, next and the important part of this instruction code is divided into various parts. Basically, this instruction code is divided into various parts. Okay, for example, address part of the operand, or you can say next part may be the operation code part. Okay, in this way we divide the instruction code format into various parts. Okay, so what is instruction code? It is group of bits which instruct the computer to perform particular operation. Okay, second term is operation code. Operation code is the part of instruction code. Okay, operation code is the part of instruction code which performs operations like add, shift, clear, okay, subtraction, like this. Okay, operation code is a group of bits and it is the part of instruction code which perform operations like add, shift, clear, subtract, and many more operations. Clear? So in a computer, how many we have operation code bits? Operation code bits. It depends upon the number of operations that a computer performs. Okay, it depends upon the operations a computer will perform. Clear? So operation code is the part of instruction code. So it is a group of bits which perform various arithmetic logical operations. Clear? That is called operation code. Clear? Next thing is, look at the slides. Stored program organization. And remember, in this stored program organization, remember one thing. Our memory is divided into two parts. Our memory is divided into two parts. Instruction part or operand part. Operand means data. Operands means our data. Instruction means
that which perform a particular operation. Okay, so we give the instruction to our processor. We give the instruction to our processor. For example, let us take an example of assembly language instruction. For example, if I give the instruction add a comma b to the computer, it is a full instruction. It is a full instruction, and operation code will be the part of this instruction. For example, these two are the registers. A and B are the registers, and this is the operation code. This is the operation. Here, यहाँ पर तो मैंने English में लिखा है, but in computer it will be the binary value. It will be the binary value. This is the operation code. So operation code is the part of instruction. So what does this instruction will perform operation? This instruction will perform operation add a comma b means add the content of register A with the content of register B and store the result in register A. Clear? So this instruction, complete instruction will store here in this part of the memory, instruction part of the memory. Clear? And the data, here we no need to access the data from memory because here we have two registers and data is available in these two registers. So that's why we no need to access the data from memory. Clear? And if we need a data to from the memory, in this part of the instruction will be the address of the memory where the data is present. ये आगे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे होगा. Okay, so this is, excuse me sir, yes सर मीन्स की रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी के जो मेमोरी, अगर हम मेमोरी में इसकी डाटा इसका मेमोरी में रखते हैं तो हमें उसका जो एड्रेस है ऑपरेंड में देना पड़ेगा. नहीं, अब देखो ये क्या है, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है ए एंड बी, इसमें दो रजिस्टर्स है ए और बी. ये एक पूरी एक देखो, इन असेंबली लैंग्वेज each and every instruction has the hexadecimal code. उसका एक हेक्साडेसिमल कोड होगा. ठीक है ना? जैसे सपोज करो ए एंड बी है, इसका कोई ना कोई हेक्साडेसिमल कोड होगा. जैसे सपोज कर लो 56. यस सर. ठीक है ना? ये रजिस्टर्स जो है ना वो इसी कोड में ही स्पेसिफाइड है. यस सर. ठीक है? अगर इफ आई राइट इंस्ट्रक्शन एड ए कॉमा, मैं लिख देता हूं 2500. हियर 2500 is the address. 2500 is the address of the memory where the operand is present. Okay, this is a one complete instruction. This is the one complete instruction. This is the operation that we want to perform. Okay, this is the memory address. This is the accumulator register. In accumulator register, one of the operand is present in accumulator, and second operand we will fetch from the memory from this location 2500. Dekho, yes, listen. For the purpose of adding two numbers, we need two numbers. First number is in accumulator register. Okay. Second number is in memory. So yes, the address of second operand is given in the instruction. Yes, yes, this is the address of the second operand. Yes. So first number हम accumulator से ले लेंगे. Second number we will take from memory and add both the number and store the result in accumulator. Yes, sir. Clear? So that's why we specify the address in the instruction. So this is a complete one instruction, and this instruction we will divide into various parts. आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे. ठीक है? So I hope you have cleared about the two parts of memory. The first part of the memory is used to place instruction. Second part of memory is used to keep the data. Clear? Okay. So
Next is yes, another one thing is in computer architecture, we will consider an example of memory that is of size 4096 into 16. What does it mean? This means 4096 words we can store in the memory. Clear? 4096 words we can store in the memory, and each word is of 16 bit. इसको याद कर लो जैसे मर्जी, इसको याद रखना बस कि we have a memory of 4096 size and each word is of 16 bit. This means this instruction, suppose this instruction will be of 16 bit instruction. Clear? And this 16 bit instruction is divided into various parts. This 16 bit instruction is divided into various parts. For example, अगर कहीं से ना पता चले तो पूछ लेना भाई स्टूडेंट्स. Okay, 4096 is the size of memory, and each word, this one cell represents one word. Okay, and one cell is of 16 bits. So this means we always use 16-bit instruction size. Clear? We always use 16-bit instruction size. The instruction size will be of 16-bit. Clear? So here we have 4096 into 16 means 4096 is the size of the memory. This means we can store 4096 words and each word is of 16 bit. Each word is of 16 bit. So memory की बात है तो we have to access memory. For what purpose? To access instructions, to access data from the memory. For that purpose, we need address. We need address of memory. Okay, हमें memory का address चाहिए जिससे हम हर एक ऑपरेंड, अपना जो हमारा ऑपरेंड है उसको हम access कर सकेंगे. Okay, and that address is of how many bits? 16 bits. 2 raised to power 12. 2 raised to, not 16. 16 is the size of the word. 16 Yes, का साइज है जो हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होना है ना, that is of 16 bit. But the address which we use to access that bits or that data, that will be of 12 bits. Because why? How? 2 raised to power 12 is equal to 4096, and जो पावर होती है ना हमारी, that bit equal, that number equals to the address bits. Yes. So here to access 4096 memory size, we need 12 address lines. We need 12 address lines. Clear? Okay, students. Now, suppose if we divide, this is our 0 to 15. This is our one cell of memory which is of 16 bit, 0 to 15 bit, and it is divided into two parts. First part is the operation code, which is of listen here, 0 to 11, these bits are used for address. These are address bits. Okay, the remaining 12 to 15 bits are used for operation code. Clear? That used for operation code. 12 to 15 bits are used for operation code, and 0 to 11 bits are used for address of the operand. Now see, if this part, second part of the instruction, suppose this is our instruction, ये हमारा instruction format है. If the second part, that is 0 to 11 bits
of the instruction is of data. अगर suppose करो यहाँ पर data directly instruction में ही given है. If data directly given in the instruction, that address is called immediate address. That address is called immediate address. IMMEDIAT, immediate address. So this means we no need to access the memory for data. If the second part of the instruction is data itself, that mode is called immediate address. That address is called immediate address. Next is, if the second part of the instruction 0 to 11 is of address, that is the address of the operand. This one, address of the operand. इसका मतलब क्या है कि हमें इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन होगा मेमोरी का जहां पर हमारा ऑपरेंड पड़ा है. ओके, सो दिस मीन्स address is given in the instruction at which our operand is present. Means we have direct address of the memory where the data is present. That is called direct address. That is called direct address. That is called direct address. Now, the next case is if the second part of the instruction is of address of the memory, and at that address there is another address. Suppose ये हमारा memory का address है. Suppose 1 2 3 is memory address, and at the address 1 2 3 we have another address that is 546, and this is our 546, and here we have data. This is called indirect address. This is called indirect address. हमें क्या है, डेटा का डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन नहीं है. इंस्ट्रक्शन में we have address of memory, at that address we have another address, and that address we have data. Okay, indirectly we are accessing data. So that is called indirect address. Indirect address. And now how we differentiate between direct and indirect address? For that purpose we use bit number 15. Bit number 15 as a mode bit, and 12 to 14 bits are used for operation code. If mode bit, that is I, equal to 0, this means that is direct addressing. This means the address is given in the instruction is the direct address. If mode bit is equal to 1, this means the address given in the instruction is the indirect address. Okay, so look at the slide. We have example, this one. Here we have an instruction 0 add 457. This is our instruction which is of 16 bits, 0 to 15, and this instruction is divided into 3 parts. 0 to 11 bits represents address of the operand. 12 to 14 bits are 3 bits are used for operation code, and last bit number 15 is used for mode bit. Here we have, in this instruction we have mode bit 0. This means the address given in the instruction is direct address where the operand is present. Here the instruction is add. Add means we have to add 2 numbers. Okay, so first one of the operand is present in accumulator register. Second operand we take from the memory, and the operand address is given in the instruction. 457 is the memory address where the operand is present, means second operand is in memory and first operand is in accumulator. Add
both the numbers and whatever the result, store that result in the accumulator. So in this example, we have direct address of the operand. So that's why it is called direct addressing. And also we have mode bit is equal to 0. So this means the address given in the instruction is of direct address. Now see, in the second diagram, here we have instruction add 300. What is 300? 300 is the memory address. So operation is add and mode bit is 1. So this means 50th bit is 1, that is equal to indirect. This means indirect. So this means the address given in the instruction, that is of 300, is not the operand address. It is the address of memory. 1350 is the memory address where the operand is present. So we have two access for accessing the operand. First address 300 is the memory address where the address of operand is present, and at 1350 address we have operand. Then add this number with the number of accumulator and store the result again in accumulator. So here in this instruction we have not given the direct address of the operand. Firstly, we have given the address of memory, and at this address we have operand. So that's why it is called indirect address. And how to differentiate these two address, direct and indirect? We have mode bit number 15. That is, if it is 0, then the address given in the instruction is of direct address, and if the mode bit is 1, it means the address given in the instruction is not the direct address. It is the indirect address. So in this way, we differentiate direct and indirect address. So, and what is the effective address? Effective address is the address of operand. Effective address is the address of the operand. In the first case, indirect addressing, what will be the effective address? Students, effective address क्या होगा? 457. Yes, exactly. 457 is the effective address because it is the address of operand. In indirect addressing, 1350. Yes, 1350 is the effective address. Okay, clear? बहुत important है for the exam point of view, differentiate between direct and indirect address. Okay, so इसको एक बार देख लेना अच्छे से, पढ़ लेना. यदि कोई doubt आए तो you can ask. Okay, the next next topic is basic computer registers. बहुत important है, 2 marks में question बहुत बार पूछा जाता है. So various registers used in a basic computer, we have, for example, registers are used for what purpose? Store memory. To store memory. To store data, not memory. To store data. Yes, sir. Store data. Okay. Yes, sir. Registers are used to store data. So, for example, we have instruction register. First, we have instruction register. It is of size 16 bit. का साइज जो है वो 16 बिट का होगा. क्यों इसका साइज 16 बिट है? बिकॉज वी हैव, जो हमने मेमोरी कंसीडर की है, दैट इज ऑफ 4096 इंटू 16. तो वर्ड साइज कितना हो गया हमारा? 16 बिट का है. सो दैट्स व्हाई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट 0 to 15. Okay. Next is, and this register is used to store the instruction. Any instruction, firstly, it is in memory. Okay. From memory, we will read
a particular instruction and place it in the instruction register. Okay, कोई भी instruction है, चाहे वो data है, चाहे कोई number है, वो हमारा memory में होगा. Okay, after that we will read instruction from the memory and place that instruction in the instruction register. So that's why it is of 16 bit. Data register का साइज क्या होगा? What will be the size of data register? तमन्ना? It would be सर इसका साइज होगा 16 बिट ही होगा सर. Yes, it is also 16 bit. Okay, and remember one thing, address registers को छोड़कर बाकी हमारे जो registers होंगे वो 16 bit के होंगे. उसके अलावा दो और रजिस्टर हैं, इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर, दैट इज ऑफ 8 बिट. ओके, सो डेटा रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट. इट इज आल्सो 16 बिट एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा. डेटा रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर data which we read from memory and place it in the data register. So the representation of the data register is like this, 0 to 50. Okay, next we have temporary register. It is also 16 bit register. It is also 16 bit register and it is used for storing intermediate results, and temporary register is used for storing intermediate results. Okay, next we have accumulator register. मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, IR, DR, TR, AC. These are the name of registers. Okay, AC means accumulator register, TR means temporary register, DR means data register, IR means instruction register. Clear? And we have accumulator register, and accumulator register is also 16 bit register. क्योंकि इसमें हमारा डेटा स्टोर होना है, ऑपरेंड स्टोर होना है, रिजल्ट स्टोर होना है, तो वो इट इज आल्सो 16 बिट रजिस्टर. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, PC, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. सर एक्सक्यूज मी. हाँ जी सर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नो हाँ, डेटा पोर्शन इंस्ट्रक्शन में नहीं होता ना, वो इमीडिएट के केस में होता है ना. यस सर. तो देखो जैसे दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड हमारा मेमोरी में है, उसको मेमोरी से हम जब भी रीड करेंगे तो उसको हम डेटा रजिस्टर में ही रखेंगे, ठीक है ना. मतलब कि एक टाइम पे हमारे दो रजिस्टर तब यूज होंगे? हाँ, हो सकते हैं. जैसे एडिशन करनी है तो दो रजिस्टर ही यूज होंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में दो होंगे, लॉजिकल और ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो वी नीड 2 रजिस्टर्स. ओके ना, दो ऑपरेंड मींस 2 रजिस्टर्स. सर लाइक डिपेंड करता है, उस केस में क्या होता है कि हमारा हम एक ऑपरेंड मेमोरी से ले लेते हैं और एक ऑपरेंड हमारा रजिस्टर में होता है, जहाँ फिर दोनों ऑपरेंड से रजिस्टर में हो सकते हैं. ठीक है, यस सर. हाँ, इस तरह हो सकता है. बट फिर भी जब भी होगा ना, ये याद रखना, डेटा जब भी हम रीड करेंगे ना मेमोरी से, वो डेटा हम डेटा रजिस्टर में डालेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालेंगे. ठीक है? यस सर. ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर. बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर. नो, our program is a sequence of instruction. Our program is a sequence of instruction. For example, this one I1, this is I1 instruction, means first instruction, I2 instruction, I3 instruction, I1, I2, I3, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the address. I1 का address 1 2 3, I2 address 4 5 6, and 7 8 9 is the address of I3 instruction. Okay, program and let us suppose we are currently at I1 instruction. We are currently executing I1 instruction, means 1 2 3 address वाली जो instruction है उसको हम execute कर रहे हैं. Now in program counter is used to store the address of the next instruction to be
executed. Program counter register is used to store address of the next instruction to be executed. For example, currently we are executing I1 instruction and its next instruction is I2 instruction. So program counter is used to store this result. मीन्स जो करंट एग्जीक्यूट हो रही है ना उससे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करते हैं. ओके, सो फर्स्टली हमारे पास 1 2 3 है, तो प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस होगा 4 5 6 वाला. मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस. सो इट इज ऑफ 12 बिट. हमारा जो मेमोरी एड्रेस है इट इज ऑफ 12 बिट. क्लियर? सो दैट्स व्हाई प्रोग्राम काउंटर इज ऑफ 12 बिट रजिस्टर बिकॉज दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस. ओके, नेक्स्ट इज एड्रेस रजिस्टर. This register is used to store the memory address. This register is used to store the memory address. For example, if we have instruction add a comma 2 1 2 3, this is the memory address where the operand is present. So this address will store in this register. जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये एड्रेस रजिस्टर में चला जाएगा और इस एड्रेस कंट्रोल व्हाट द कंट्रोल विल डू, कंट्रोल विल एक्सेस एड्रेस रजिस्टर and from that register use 1 2 3 address of memory and fetch the operand. So this means address register is of 12 bit and it is used to store address of the memory. Memory का address store करने के लिए address register use करते हैं. There is a difference between program counter and address register. Suppose now we are currently we are executing I1 instruction and its address is 1 2 3. In address register we have 1 2 3 memory address, but in program counter what will be the content of program counter? It will be the 4 5 6. means currently हम 1 2 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है? उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर. ओके, एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द करंट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, बट प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. क्लियर? These are and we have two registers: input register INPR and output register OUTR. These two registers is of 8 bit. ये 8 bit के registers होते हैं. Input register means to take the input from input devices, and output register is used to send the content or data to the output device. For example, if I press a key from keyboard, if I press A from the keyboard, it's 8-bit ASCII code. Its 8-bit ASCII code will go in the input register. Yes, and output register is used to output the 8-bit data to the output device. For example, मैं monitor को डेटा भेजना चाहता हूँ, जहाँ मैं प्रिंटर को भेजना चाहता हूँ, तो आउटपुट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर दैट वन. क्लियर? फॉर सेंडिंग द डेटा आउटपुट डिवाइसेस. क्लियर? दीज आर द बेसिक रजिस्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन बेसिक कंप्यूटर्स, एंड दीज रजिस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दीज रजिस्टर्स ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, कई बार पूछा गया. कॉमन बस सिस्टम मैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद करवाता हूँ आपको. यस.
Okay, students, next important topic, very important topic, mark कर लो इसको, that is instruction format. जो हमने अभी किया ना कि हमारी we have an instruction, it is divided into various parts. Okay, अब उनकी हमने टाइप्स करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. Next topic is computer instruction format. We have three types of instruction format. We have three types of instruction format. First type is memory reference instruction. Second type is register reference instruction format. And third is input output reference. सर नीचे विजिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड. ये थर्ड वाला विजिबल नहीं हो रहा सर इसके बाद नहीं विजिबल होगा. सर विजिबल है सर थर्ड वाला. सर इसके बाद नहीं विजिबल होगा. कोई बात नहीं, मैं आगे कर दूंगा. इंस्ट्रक्शन फॉर यहाँ तक विजिबल है ये लाइन तक. सर 3 का सर 3 थोड़ा सा सिर्फ 3 तक विजिबल है. ये लाइन यस सर. तक. यस सर विजिबल. Okay, okay. We have three types of instruction format. The first is memory reference instruction format. Second is register reference instruction format. The third one is input output reference instruction format. Okay, अब हम करते हैं memory reference instruction format. As the name, we have memory reference. Okay, so इससे हमें कुछ guess होता है कि we are using memory. We are using memory for various operations. For accessing the data, we use memory. Okay. So memory reference means the instruction format is divided into three parts. Instruction format is divided into three parts. 0 to 11 bits are used for address of operand. In memory reference, 0 to 11 bits are used for memory reference. 12 to 14 bits are used for operand operation code. operations. Yes. Operation code. And last bit number 15 is used for mode bit. 0, Yes. 1. Yes. Mode bit. Mode bit is to differentiate between direct or indirect. Indirect. ओके, मींस कि ये जो एड्रेस है वो डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस, ऑपरेंड का एड्रेस है, जहां पे मेमोरी का एड्रेस है इसका एड्रेस. Yes sir. So 0 to 11 bits are used to represent address of the operand. 12, 13 and 14 bit number are used to represent operation code. इससे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हम? ऐड का, एंड का, लोड के कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं? And bit number 15 is used to differentiate between direct and indirect mode. And remember one thing, mode bit is always used in memory reference instruction and for differentiating between direct and indirect. And mode bit is not used in these two types, register and input output reference. Clear? इसमें क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ. Okay. In this case, 12, 13 and 14 bits. If 12, 13, 14 bits are not equal to 111, if 12, 13, 14 bits is not equal to 111, अगर ये 111 के equal नहीं है, so this means we are using memory reference instruction. So this means we are using memory reference instruction. If
if 12, 13, 14 bits are equal to 111, का मतलब क्या है कि either we are using register reference or input output reference, but not memory reference instruction. So this means if 12, 13, 14 bit 0, 0, 0 in binary, that is equal to 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, and 1, 1, 0, यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yes, sir. 0 to 6. If 12, 13, 14 bits are equal to 0 to 6, this means we are using memory reference instruction. Clear? 111 bits are not used in memory reference instruction. Okay, and bit number 15, it may be 0 or 1. 0 for direct mode Direct. and 1 for indirect mode. Yes, sir. ठीक है? 12, 13, 14 bit 111 नहीं होनी चाहिए memory reference. And another one thing is 000 represent particular operation. It may be a add. This will represent add operation. This means we will perform add operation. 001 means we will perform AND operation. मतलब ये जो bits है ना, ये किसी एक operations को specify करती होंगी. 12, 13, 14 bits will specify a particular operation, or it may be a AND operation, add operation, AND operation, load operation. ठीक है, इस तरह से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. यहां तक क्लियर है? Yes, Any sir. doubt, students? 0 to 11 bits are used to represent address of the operand. मेमोरी रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमारा एक ऑपरेंड मेमोरी में पड़ा है और ये उस चीज का एड्रेस है. हम मेमोरी से ऑपरेंड को एक्सेस करेंगे. एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस चाहिए, तो वो एड्रेस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन में गिवन है. डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर दैट पर्पस वी हैव ऑपरेशन कोड्स 12, 13 and 14 bits, and these bits specify a particular operation. 15 bit mode bit which specify the mode. Either we are using direct mode or indirect mode. Okay. Now, if I talk about register reference, इसका मतलब क्या है? This means our data is present in a register. Our operand is present in a register. We no need to access the memory. We no need to access the memory. Our data is present in register. For example, हमारे पास एक example है add A, B. The data is present in these two registers A and B. Add the content of both registers and results stored in A. तो हमें memory को access करने की जरूरत नहीं है. We no need to access the memory because our data is present in register A and B. But in this case, if I write add add A, 1, 2, 3. So this means one operand is in accumulator register and second operand is in memory. This is the address of the memory. So we are accessing operand from memory. So that's why it is called memory reference. Memory reference में भी this address is either direct address or indirect address. ठीक है, वो हमें 15 बिट से पता चल जाएगा. तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेमोरी रेफरेंस और रजिस्टर रेफरेंस में डिफरेंस क्या है. इन रजिस्टर रेफरेंस आवर डेटा इज प्रेजेंट इन रजिस्टर्स. वी नो नीड टू एक्सेस द मेमोरी, बट इन केस ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन address of the operand is given in the instruction. ठीक है. So in address register reference,
add a comma b means add the content of a and b, store the result in a. तो हमें मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है. So सर that's एक्सक्यूज why. मी Yes. सर, यहाँ भी ऐड का जो होगा कोड 000 ही होगा. यहाँ पर कोड अलग है. यस सर. यहाँ पर कोड अलग है, मैं आपको बताता हूँ. यस सर. In register reference instruction 0 to 11 bit, 0 to 11 bit, इनको याद कर लेना अच्छे से. 0 to 11 bit in register reference instruction is not used to represent the address of the memory. क्यों नहीं हम ये बिट्स मेमोरी का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं? Because our data is present in register. रजिस्टर. So that's why we no need to access the memory. So 0 to 11 bits are used to represent register operations. So this means 0 to 11 bits are used to represent operations which we want to perform. कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, रजिस्टर के साथ. So these 12 bits are used to represent operations, and 12 to 14 bits always equal to 1. पता चला? यहाँ पर हमने 111 क्यों नहीं यूज किया था? अगर हम 111 यूज करते तो इसका मतलब क्या होना था? वी आर यूजिंग रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. सो 12, 13, 14 bits are always equal to 1, and bit number 15 is 0. Bit number 15 equal to 0. So remember, in a register reference instruction format, 12, 13, 14 bits always equal to 0, 111. Clear? This is equal to hexadecimal 7. क्लियर? ठीक है जी, ये याद रख लो. रजिस्टर रेफरेंस क्या हुआ फिर? 0 to 11 bits are used to represent operations. 12, 13, 14 bits are always equal to 7. Clear? 0, 111. This means we are using register reference instruction format. हाँ जी बच्चे. एक्सक्यूज मी सर. सर जो हमने मेमोरी में किया था ऑपरेशन ऐड ए और बी को, वो तो हम कर लेते हैं. जो आपने एग्जांपल बताई थी ए और 123 वाली, हाँ जी, वो दोबारा से बताना. देखो उसमें क्या है कि उसमें हमने एड्रेस दे दिया मेमोरी का. एड ए कॉमा 1 2 3, जैसे मैंने डायरेक्ट वाला केस बताया था ना एग्जांपल पीछे डायग्राम के साथ. हाँ जी सर. वही चीज है. इसमें क्या है कि एक ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड हमारा, देखो हमें ऐड करने के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं. सपोज करो ए विजिबल है ऊपर. नो सर. यस सर. यस सर. ए इज इक्वल टू 01 है, ठीक है. और ये फर्स्ट नंबर है हमारा, ये फर्स्ट नंबर जो कि ए रजिस्टर में. मेमोरी में 1 2 3 मेमोरी एड्रेस में हमारा सेकंड नंबर है. सपोज करो वो 02 है. इन दोनों को ही ऐड करेंगे ना, 01 और 02 को. फर्स्ट नंबर तो हमें एक्यूमुलेटर से मिल गया, सेकंड नंबर हमने मेमोरी से लेना है, और मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन है. 1 2 3 इज द मेमोरी एड्रेस, है ना. इसके ऊपर हमारा क्या पड़ा है? डेटा पड़ा है 02. इन दोनों को, एक्यूमुलेटर वाले 01 को और मेमोरी वाले डेटा को 02 को, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर ए रजिस्टर में ही स्टोर हो जाएगा. इसीलिए हमें ये सेकंड ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए हमें मेमोरी एड्रेस देना पड़ा. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है, एंड सेकंड नंबर इज ऑन मेमोरी, इन मेमोरी. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पेसिफाई द एड्रेस. सो वी हैव टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द सेकंड ऑपरेंड in the instruction. But in this case, both the numbers, the first number in A register and second number in the B register, and this instruction will add when we execute this instruction. So this will add the content of both numbers A and B, and result stored in A.
In this case, first number in the accumulator, second number in the memory, add both the number and store the result in A. ठीक है ना? तो memory reference means we have to access the memory for operand, but register reference means कि हमारे दोनों नंबर जो है वो A और B रजिस्टर में होंगे. ठीक है? And 0 to 11 bits are used to specify the operation. What operation will perform? जैसे for example add. ये पूरा का पूरा जो add है ना, ये 12 बिट का होगा ऑपरेशन कोड. अभी आपको एग्जांपल बताता हूं मैं नेक्स्ट. ठीक है? And 12 to 15 bits always equal to 7, 0, 1, 1. Okay. Next is input output reference. If bit number 15 is equal to 1 and 0 to 11 bits in input output reference case, we also no need to access memory. हमें memory को access करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? So this means 0 to 11 bits are used to specify the operation. ठीक है? Input output operation. And 12, 13, 14 bits always equal to 4 times 1. And this is equal to F. ये पता है ना सबको? ये बाइनरी में 111, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में F को कन्वर्ट हो गया वो. ठीक है? Yes, sir. 4 times 1 is equal to F. So क्या हमें कंक्लूजन क्या मिला? If 12, 13, 14 bits not equal to 111, this means these are 0 to 6. We are using memory reference instruction. If 12, 13, 14 bits equal to 111, bit number 15 is 0, then we are using register reference instruction. If 12, 13, 14 bits are equal to 111 and bit number 15 is 1, that means we are using input output reference instruction. And always computer control always inspect 12, 13, 14 bits. Control always inspect 12, 13, 14 bits of the instruction. If these bits are equal to 0 to 6, 0 to 6 means we are using memory reference. If 12, 13, 14 Sir, bits, 0 to 7 नहीं आएगा. No. In memory reference के केस में 0 to 7 is 0 to 6 होगा. अगर 7 हो गया तो वो 111 हो जाएगा. 111 हो गया तो this means we are using either register reference or input output reference. Yes, sir. ठीक है? So control always inspects 12, 13, 14 bits. If these bits are equal to 0 to 6, this means we are using register reference. Oh, sorry, memory reference. If 12, 13, 14 bits are equal to 111 and then control inspects bit number 15. If it is 0, this means that means we use register reference. Okay? If it is 1, that means we are using input output reference. Clear? अब एक और बात है, यहाँ पर देखो मेमोरी रेफरेंस के केस में if 15 bit is 0 like this, then 0 0 0 0 0 0. ठीक है? 4 बिट्स बन गए हमारी 12, 13, 14, 15. तो ये हमारी हो गई मोड बिट. अगर if you convert this binary number into hexamal, this will equal to 0, 0. and this 1 equal to 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है? तो 0, 7 तो हम लिख नहीं सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज फिर वो क्या है, फिर वो बन जाएगी हमारी रजिस्टर रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर हमने रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस, वी विल नॉट यूज बिट नंबर 15 एज अ मोड बिट. क्लियर? नाउ if I write if bit number 15 is equal to 1,
ये 1 है, तो 12, 13, 14 बिट्स. Bit number 15, 1, 1. Okay, and these bits are equal to 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, and 1, 0, 1, 110 1, 1, 0. So this will equal to 1,000 equal to 8 in hexadecimal 1,000 equal to 8. ठीक है? 8 So this means 8 is also used. 1 and 8. 1 and 8 is used for performing the operation add. Suppose add operation. ठीक है? देखो, sorry, 0 and 8. 0 and 0 and 8 is used for performing operation add, but the mode is different in both the cases. If 15 bit is 0, if we are using this 0, so this means we are performing add operation with the direct mode. If we are using 1,000, if we are using 1,000, this means we are performing add operation, but the mode is indirect. Correct. Clear? ये चीज clear है? If 15 bit is equal to 0 and 12, 13, 14 bit equal to 0, that means we are using add operation with direct mode. And if we are using 1,000, this means देखो 000 का मतलब ही है add operation, और 1 Yes, का sir. मतलब क्या हो गया? mode. इनडायरेक्ट मोड हो गया. Yes, इस sir. केस में 0, इस केस में 0 मींस ऐड ऑपरेशन. 15 बिट 0 है तो डायरेक्ट मोड हो गया. लेट अस सपोज नेक्स्ट कोड 0001. 001 इज यूज्ड फॉर एग्जांपल एंड. ठीक है? तो एंड 15 बिट इक्वल टू 0 में डायरेक्ट मोड. नेक्स्ट इज 1001. 9 001 equal to 9. It is also used for AND operation, but with indirect mode. But with Yes, sir. indirect mode. ठीक है कि नहीं? Clear, students? Yes, sir. Clear. हाँ. So this is about basic computer instructions which we are used in computer. बहुत important है. इसको एक बार देखना. एंड इसके आगे एग्जांपल मैं करवाऊंगा आपको इनकी कि कैसे हमारा ये जो हम बोल रहे हैं ना 0 to 15 कोड, ये कैसे बनेगा हमारा, वो आगे आपको मैं करवाता हूँ इंस्ट्रक्शंस में. बस उससे पहले मैं आपको क्या है कि वो लॉन्च कर रहा हूँ पोल, तो उसका एग्जाम वो आंसर देना. ठीक है? 5 मिनट्स होंगे आपके पास. तो पोल 1 लॉन्च कर रहा हूँ मैं. स्टूडेंट्स एक और बात है, जब भी आप लॉग इन करते हो ना, आपकी आईडी जो है ना, वो पहले आपका रोल नंबर होना चाहिए, फिर आपका नाम. ठीक है? ये सबके लिए एक ही पैटर्न होना चाहिए सबका.
फर्स्ट योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, देन योर नेम। ठीक है, इस तरह से आपने करना। इंद्रजीत सिंह आप भी चेंज कर लेना अपना ये नाम। ठीक है, यस सर। अबे 19000102, first write your roll number and then your name. Okay, sir. और भी हैं काफी स्टूडेंट, अंगदजीत, चाहत, हरकीरत, करणवीर सिंह, मुस्कान, राघव, जसप्रीत सिंह। ठीक है, ये चेंज कर लेना आप सारे। नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही लॉग इन करना। फर्स्ट राइट योर रोल नंबर, यूनिवर्सिटी एंड देन योर नेम। डन सर। हो गया सबका? यस सर। चलो 1-2 मिनट और दे देता हूँ तो कर लो। सर रीनेम वाली ऑप्शन स्टार्ट कर दो सर, रीनेम कर दो। वो मुझे करना पड़ेगा यहाँ से। यस सर। चलो कर दिया मैंने। यस मुस्कान। देखो मैंने रीनेम की ऑप्शन अनेबल कर दी है, तो यू कैन चेंज योर, ठीक है, वो पैटर्न जो है वो चेंज कर लो। सर डन। ओके, हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स कर लिया आपने सबने कॉल अटेंड? यस सर। एंड कर दूं फिर? यस सर। ओके, आई एम गोइंग टू एंड योर कॉल। Okay, this table is given in your book, मॉरिस मैनो बुक। तो ये फिक्स है, ठीक है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है, तो ये बुक में ही गिवन है। इसमें क्या है कि इन दिस टेबल वी हैव वेरियस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। सर पोल के आंसर डिस्कस कर दो। वो मैं सेंड कर दूंगा आपको फिर, ठीक है, सारे कर दूंगा इस बार, सर सारे एक इकट्ठे था कर कि दूंगा। इनपुट इन्फॉर्मेशन, सर उसका क्या आंसर आना था? इसका सर इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना, उसको क्या कहते हैं? हाँ ये देखो Data कौन सा mining. ऑपरेशन, मेमोरी ऑपरेशन Right होगा ये, मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा। राइट राइट ऑपरेशन। ऑपरेशन। यस हाँ जी। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इन फॉर विद मेमोरी वी हैव टू ऑपरेशन, वन इज द रीड ऑपरेशन, रीड एंड राइट second is ऑपरेशन। the write operation. Read operation is used to read the data from memory and write operation is used to write new data on the memory. यस सर, मैंने सर राइट ही किया है, लेकिन सर डाटा माइनिंग भी तो इंफॉर्मेशन स्टोर कराने का एक मेथड नहीं है। नहीं हम मेमोरी की बात कर रहे हैं ना, डाटा माइनिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, यस सर। हम मेमोरी की बात कर रहे थे। मेमोरी के साथ क्या कर सकते हैं, तो वो मेमोरी राइट आएगा। यस सर, वही है सर। Okay, so this table is consist of various instructions. These instructions and add, LDA, STA, BUN, BSA, ISZ ये हमने next आगे डिस्कस करनी है वन बाय सारी की सारी। तो अभी जस्ट इनके नाम देख लो। एंड दिस इज लॉजिकल एंड, दिस इज एड ऑपरेशन, दिस इज लोड ऑपरेशन, दिस इज स्टोर, this is branch. These three instructions are used for branching. Branching means jump instruction. Okay, just इतना ही आप याद रख लो। तो these instructions and add, LDA, STA, BUN, BSA, ISZ, these are memory reference instructions. Okay, next CLA, CLE and so on, HLT, these are register instructions, register reference instructions. And the last input output SKO, ION, IOF, these are the input output operations. तो आपको just you remember only 2 or 3 instructions from each group. Okay, for example purpose, अगर एग्जाम में आता तो you can write 2 or 3 examples from each group. जस्ट रिमेंबर, सारे का सारा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ आई विल टेल यू हाउ 16-bit कोड वी कैन राइट विद दीज हेक्साडेसिमल कोड। ओके, फॉर एग्जांपल 0XXX, दिस मींस if I is equal to 0, I is equal to 0 means mode bit, if mode bit is equal to 0, okay, then what will be the code for एंड ऑपरेशन? जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ना वही है 000। सर यहाँ पे एंड का 000 दिया हाँ वो है, चेंज है वो। जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये हो सकता है ना ऐसे। चलो मैं आप डिस्कस कर देता हूँ फिर आपसे कि इफ I is equal to 0 and I is equal to 1. If I is equal to 0, this means indirect mode. If I is equal to 1 means indirect, I is equal to 0 means direct, I is equal to 1 means indirect. Then AND, A-N-D, AND has a code 0 cross triple cross. Triple cross means address. It is the address of the memory. This is of 4-bit, this is also 4-bit, this is also 4-bit, this is also 4-bit. Then for example this is our instruction. ये address cross इसलिए है कि it depends upon the computer architecture कि क्या उनको allocation होती है, address क्या allocate होता है, कहाँ से start होता है। So in general we represent address bits with cross. Let us suppose it is 1 2 3, ये मेमोरी का एड्रेस है, एंड वी हैव 0 1 2 3 इज द कोड फॉर एंड ऑपरेशन। नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू बाइनरी ऑफ 16-bit? so in memory 0 to 11 bits are used for what purpose? एड्रेस स्टोरिंग, for storing address, for Address. representing address. So 1 2 3 1 2 3, convert this hexadecimal number into binary. 3 का कोड क्या होता है? 0011।
0011, okay, 2 का 0010, 1 का 001, 001 क्लियर। ये देखो बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारी 11 बिट्स बन गई। एंड दीज 11 बिट्स आर यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी। सर इसीलिए 4096 लेते हैं मेमोरी एड्रेसेस टोटल। ना सर जैसे हमारे पास टोटल 12 आ जाएगी ना, 12 बिट्स होती है ना जैसे। यस 0 to 11 12 बन गई है। यस सर, सर इसीलिए हम 4096 मेमोरी एड्रेसेस लेते हैं टोटल। 409, हाँ वो भी है, वो भी एक बात है। वो एक्चुअली क्या है कि वो हमने एक एग्जांपल जो है ना वो सेट कर दी कोलपी में, यहाँ इसमें कि हम जितनी भी एग्जांपल्स लेंगे, जो भी लेंगे ना मेमोरी की या रजिस्टर, उस 409 के अकॉर्डिंगली ही हमने सारा कुछ सेट किया हुआ है। चाहे ये एड्रेस है, चाहे रजिस्टर्स का साइज है, चाहे मेमोरी का Yes, sir. साइज, ठीक है ना। 409 के अकॉर्डिंगली ही हमने सारा कुछ सेट कर दिया। एक जर्नल एग्जांपल हमने ले ली कि इसके अकॉर्डिंगली जो भी हम काम करेंगे, चाहे वो रजिस्टर है, रजिस्टर साइज है, चाहे मेमोरी साइज है, या फिर मेमोरी का एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कर दिया। यस सर। ठीक है ना। सो दीज 12 बिट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग address of the memory where the data is present. So this address is used for operand. Okay, now the operation is AND. 12 to 14 bits used to represent the operation. What is the operation? AND operation. And the code for AND operation is 0000. 000. 12, 13, 14 bit. If 12, 13, 14 bits are equal to 0, this means we will perform AND operation. And the last bit, mode bit, bit number 15 equal to 0. Clear? So this means this is the direct mode, direct AND operation. Yes. Clear? Now in this way we write our instruction code that is of 16 bit. पता चल गया कैसे हमें 16 बिट का कोड लिखना है? To perform AND operation by using indirect mode. For that purpose we have, उसके लिए हमारे पास जो कोड है वो क्या है? 8 Sir, excuse me. triple cross. Triple cross again is the address. Suppose it is 1 2 3. This is again like this. And what is the code for 8 in 100. binary? 100. 1 0 0. Yes sir. Okay, 000 is used to perform AND operation, and 1 is the indirect mode. Sir, excuse me. Yes. सर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास दूसरा ऑपरेंड भी तो होना चाहिए जिसके अंदर हम ऐड करेंगे। देखो हाँ सही बात है। उस केस में क्या है कि आपने हमेशा याद रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मेमोरी का हो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि एक ऑपरेंड ही हमारे पास, मेमोरी से हम एक ऑपरेंड को एक्सेस करेंगे, दूसरा ऑपरेंड ऑटोमेटिकली आपको क्या है एक्यूमुलेटर से आप कंसीडर करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड आपने एक्यूमुलेटर से कंसीडर कर लेना है, दूसरा ऑपरेंड जो है आपने वो दूसरे ऑपरेंड का एड्रेस आपको मेमोरी में गिवन होगा, दोनों को ऐड होगी। इसका मतलब क्या है कि एक ऑपरेंड हमारा रजिस्टर में, सेकंड ऑपरेंड हमारा मेमोरी से लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेम इसमें भी यही होगा। फर्स्ट ऑपरेंड हमारा हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर से लेंगे, सेकंड ऑपरेंड हम जो है वो मेमोरी से लेंगे, दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। ये बात याद रखना आप सारे, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन राइट 16-bit कोड फॉर वेरियस ऑपरेशन। कोई और देख लो, ऐड का देख लो। ऐड इज इक्वल टू 001 1। यस सर। 1 ट्रिपल क्रॉस। तो क्रॉस जो है दैट इज योर एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। अगेन यू कैन कंसीडर 1 2 3 एड्रेस एंड 001 and mode bit is, if mode bit is 0, this means direct mode, and we will perform add operation, ADD, add operation. This means add operation with direct mode. ठीक है, and
In indirect case, what will be the code for X? That is 9 cross. देखो मेमोरी के दोनों केसेस में हमने 111, 12, 13, 14 बिट 111 और अगर हम 9 से यहाँ पर भी जाते हैं ना तो E तक ही जाते हैं हम, 8 to E और 0 to 6. ना तो हमने 7 लिया है ना ही हमने F ली. We don't consider 7 and F. ठीक है, 7 is for register reference, F for input output reference. ये याद रख लो. And अगर आप 7, if you convert 7 into binary form, it will be equal to 01111. That is equal to 7. If you convert F into binary, that is equal to 4 times 1. So this is for F, always for input output instruction format, and 7 always for register reference instruction format. Clear? तो आप बाकी की इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको पीपीटी ये सेंड कर दूंगा, उसको भी यूज करके देखकर आप अपना कोड जो है वो बना सकते हो. तो एग्जांपल आपने 2-3 एग्जांपल्स ऐसी जो है वो याद करनी है फॉर द एग्जाम पर्पस. ठीक है, लिखने के लिए. क्लियर हो जाएगा ये बच्चे सबके लिए? Yes sir. Next is register reference instruction. Register reference instruction. For example, register reference instruction, let us suppose we have instruction CLA and its code is 7800 in hexadecimal. In hexadecimal. CLA means clear accumulator. This means whatever the value of accumulator registers, clear it to 0. Yes sir. Clear? CLA means clear accumulator, clear the content of accumulator, and its code is 7800. If I provide 78000 to the computer, it will perform this operation. CLA. देखो assembly language में क्या होता है, we will, देखो मैं अभी बता रहा ना, CLA 7800 is the code of CLA. In assembly language, we provide 7800 code to the computer, not CLA. हम कोई ये जो निमोनिक्स होते हैं ना, जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारा एक प्रोसेस है 8085, वो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर काम करता था. ये लैब में आपको मैं बताऊंगा, सैटरडे हमारी लैब की क्लास लूंगा मैं सैटरडे को. ठीक है, आपको लिंक भेज दूंगा जूम का मैं, तो मैं आपकी क्लास लूंगा, लैब की क्लास होगी वो हमारी. ठीक है, उसमें आपको मैं पहले बताऊंगा बेसिक, फिर हमें क्या करना है वो सारा बताऊंगा. तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था एक. 8085 इज द माइक्रो प्रोसेसर विच इज बेस्ड ऑन असेंबली लैंग्वेज. वो असेंबली लैंग्वेज यूज करता था. असेंबली लैंग्वेज में तो निमोनिक्स यूज करता था. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखी थी ना, एड A, B, जब if I write MVI A, 01, this is assembly language. ठीक है ना, and each instruction, ये instruction, ठीक है, this is second full instruction, and this instruction has a hexadecimal code. For example, if its code is 86, its code is 57, होगा कोई एक्चुअल में है इसका कुछ ना कुछ कोड, तो मुझे याद नहीं है, तो मैंने ये एज ए आपको एग्जांपल बताया कि ये वाली एड A, B इंस्ट्रक्शन तो कोड वो 86 है. तो वी विल प्रोवाइड दिस 86 टू द 8085 माइक्रो प्रोसेसर. इफ 8085 प्रोसेसर रिसीव 86 हेक्साडेसिमल कोड, देन दिस मींस द प्रोसेसर विल परफॉर्म ऑपरेशन एड A, B. ये क्या करेगा, A और B के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, एडिशन करेगा. ये मैं आपको लैब में कराऊंगा, आराम से करेंगे सैटरडे को, बहुत टाइम होना हमारे पास. ठीक है, तो आप बताओ तो मुझे कितने बजे आप क्लास लगाना चाहते हो, सुबह 10 बजे, 11 बजे, कितने बजे स्टार्ट करें? सर जो मर्जी बताओ. सैटरडे फ्री होते हैं, कॉलेज तो बंद है अभी सैटरडे को. ठीक है, लॉकडाउन के कारण हमारे सैटरडे को अभी क्लास नहीं होगी. हमारी जो क्लास है वो ट्यूसडे ही होगी, जब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन कोई दे देता आगे फर्दर. ठीक है, तब तक हमारी क्लास ट्यूसडे 1:30 के ऊपर लगेगी, सैटरडे को नहीं होगी. ठीक है, तो CLA मींस, CLA का कोड क्या है, 7800 इज द कोड फॉर CLA. इफ we provide 78000 to the microprocessor, the microprocessor will perform this operation. The microprocessor will clear the content of accumulator to 0.
Now we have to convert 7800 into 16-bit number. Yes, sir. 0, Okay. 0, 1, 0 to 15. 15. So I have told you 0 to 11 bits are used for what purpose? Address per No, store no, address. no. That is the case of memory reference. Yes, sir. But in a register reference, 0 to 11 bits are used to represent register operations. Register operation. Yes, sir. ये याद रखना है, भूलना नहीं है. Register operations वो क्या है हमारा 800. Now convert this 800 into binary. We have 0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 0, 0 0 0, 0 0, 0. No. 1, 0, 0, 0, 1 0 1, 0 0, 0, 0. 0. No, these bits is used. These bits is the code for CLA. These Yes, sir. bits represent the code for CLA, and bit number 12 to 15 always equal to 0 triple 1. 1. That is equal to 7. So that's why we have write 7 here. 7 तो हर एक रजिस्टर रेफरेंस के लिए कॉमन ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज होना है 800. ये किसी और इंस्ट्रक्शन का और होगा, जैसे CLE है, उसका कोड क्या है? CLE has code 7400. 7400 is the code for CLE. Now you can convert this 400 into binary. Okay, ये 0 तो ये हो गया. 4 का कोड 0, क्या होता 1, है 0, बाइनरी 0. में? 0 0, 1 0. 0 0 is for this, and so 7 always equal to 0 triple 1. Easy है, Yes, sir. ठीक है ना? सर 0011 नहीं होता फोर दा? वो देख लेना क्या होता है. 0 0 0 0 equal to 0 1. Sir, 0, 1, 0, 0 होता. सर 0011 ये होता है 0 1 0 0. ठीक है, ये 4 का कोड हाँ जी ठीक सर, है. ठीक, ओके So in this way you can convert these hexadecimal numbers into binary numbers, into operation code 0 to 50. ठीक है जी, एक एग्जांपल करवा दिया, 2-3 आप खुद ही याद कर लेना अब. ठीक है, हो जाएगा? यस सर, नो? Yes, sir. यस सर. और करवा दूं? Sir, हो जाएगा. Okay. Next is input output operation. Instructions of input output operation. For example, the instruction is INP, means input. ठीक है, input character to accumulator. INP का मतलब क्या है? Input character to accumulator register. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? This will input the data to the accumulator and its code is as 800. ठीक है. Now convert this hexadecimal code into 16 bits. Yes, sir. करो, खुद करो. 0 to 1, 1, 1, 1. 0 0 0. Sir, last पे 1 आ जाएगा बस. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. 8 का कोड क्या होता है? 1, 0, 0, 0. ये 8 का हो गया, and 1, 1, 1, 1. 1 1 1 1 is equal to F. ठीक है ना? Yes, sir. तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना, इनपुट आउटपुट फॉर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन 12 to 15 bit always equal to F. Sir, Clear? इनपुट आउटपुट में भी जो 0 to 11 बिट्स हैं वो उसके लिए यूज होती हैं. हाँ, these Register 800 operation. these bits for input output operation. Yes, sir. रजिस्टर ऑपरेशन के लिए यूज होती है. रजिस्टर के केस में रजिस्टर के लिए यूज होंगी, इनपुट के लिए इनपुट के लिए यूज होगी, और मेमोरी Yes, के sir. केस में 12 बिट्स जो है वो मेमोरी एड्रेस होंगी. ठीक है. एंड Yes. एक अगेन आई एम रिपीटिंग, द कंप्यूटर कंट्रोल ऑलवेज इंस्पेक्ट 12 13 14 bits. If these bits not equal to 111, this means we are using memory reference instruction. If these bits equal to 111, then the control inspects bit number 15. If it is equal to 0, that means we are using input. We are using Register register reference. reference. If it is equal to 0 111, we are using input output reference instruction. सर वहाँ पे Sir, 1 F आएगा. 15th पे 15th Sir, पे 1 आएगा. 15th पे 1 आएगा सर.
यस सर। यहाँ 0 यहाँ होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो जाएगा? यस सर। Okay. Next is common bus system. Common bus system. Next topic is common bus system. Common bus system is basically used for to decrease our hardware. For example, in basic computer, we use 8 registers. जो मैंने आपको बताए थे 8 रजिस्टर 1 मेमोरी यूनिट, ओके। एंड अगर हम बात करें 8 register, if we talk about 8 register, it will take n inputs and it give 8 outputs in this way, okay. It will take 8 lines. It will use 8 lines for the purpose of input the data and also use 8 lines for output the data. Yeah, this is for one register. But if we use 8 registers, तो इसके लिए क्या है कि हमें इतनी ही लाइंस इनपुट पर्पस के लिए यूज करनी पड़ेगी, उतनी ही लाइन हमें क्या है आउटपुट पर्पस के लिए यूज करनी पड़ेगी. विद दिस द नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वायर्स और यू कैन से बस, BUS bus, and bus is used and bus is a path, ठीक है, and bus is used to carry data. Bus or lines or wires is, these lines or wires are used for carrying data, okay. सर ये पूरा रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आ रहा. एक मिनट दे. देखो हमारे पास वी हैव टोटल 8 रजिस्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ओके. ऑल दी रजिस्टर्स, इफ a register have 8-bit register, which this means this will take n input lines, it will use n in अगर हमारे पास क्या है 8-bit रजिस्टर है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा 8 लाइंस और यू कैन से 8 वायर्स यूज करेगा डेटा रजिस्टर में रखने के लिए, इनपुट करवाने के लिए. एंड ये क्या करेगा 8 लाइंस ही यूज करेगा डेटा आउटपुट करने के लिए, ठीक है. 8 लाइंस यूज्ड फॉर इनपुटिंग द डेटा एंड 8 लाइंस आर यूज्ड फॉर आउटपुटिंग द डेटा. एक बिट के लिए एक अलग अलग. हाँ, ये मैं 8 बिट की बात कर रहा हूँ. अगर वी आर यूजिंग 8 बिट रजिस्टर, इफ वी आर यूजिंग 0 and 1 सिग्नल की तरह सर. हाँ जी, हाँ जी, कोई भी मतलब 0-1 की वैल्यू इनपुट करवाने के लिए 8 बिट का मतलब है 0-1 कोई भी बाइनरी वैल्यूज होता है ये बेसिकली, ठीक है ना. तो ये दीज लाइंस कैरी 0 और 1, ठीक है. दीज वायर्स कैरी 0 और 1 बिट, ठीक है ना. तो अगर सपोज करो 8 बिट डेटा मैंने इस रजिस्टर में स्टोर करना है तो वी नीड 8 इनपुट लाइंस फॉर स्टोरिंग डेटा. अगर मैंने इस रजिस्टर से डेटा आउटपुट करवाना है तो वी नीड 8 आउटपुट लाइंस, ठीक है ना. तो इससे क्या है कि ये तो हमने एक रजिस्टर की बात की, ठीक है ना. इफ वी आर यूजिंग नंबर ऑफ रजिस्टर, उससे क्या होगा कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वायर्स, हमारे पास वायर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब मीन्स हमारा जो हार्डवेयर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. फॉर दैट पर्पज, फॉर रिड्यूसिंग द हार्डवेयर, ठीक है ना, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वायर्स, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ common bus system. These common bus systems is used for all the registers and memory unit, ठीक है. जिसको भी डेटा ट्रांसफर करना है
वो क्या करेगा, वही 16 बिट, वी विल यूज 16 बिट कॉमन बस सिस्टम। जिस रजिस्टर को भी डेटा ट्रांसफर करना है एक रजिस्टर टू दूसरे रजिस्टर, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम accumulator to data register, then we use this 16 bit common bus. If memory wants to transfer data from memory to data register, then it will also use this 16 bit। मींस कि ये लाइंस जो है वो सबकी रजिस्टर और मेमोरी यूनिट के लिए कॉमन होगी। ये हमने कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया, क्योंकि वी हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ लाइंस। अगर हमारी नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस होगी, दिस मीन्स हमारा हार्डवेयर रिड्यूस होगा, हार्डवेयर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, हार्डवेयर कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। फॉर दैट पर्पस वी विल यूज कॉमन बस सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि वी हैव अ डायग्राम, this diagram. In this diagram we have a memory unit, ठीक है, and 8 registers, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay। Each register its corresponding has a hexadecimal number, एक octal number। एक इसके क्या है, इनके सभी के क्या है कि corresponding एक क्या है नंबर है, 1 2 3 4 5 6 and 7, and we have 3 selection variables, S0, S1 and S2. These selection variables are used to select a particular register or memory, and the memory unit has 2 operations, read operation and write operation, ठीक है। and output from the registers are transferred to the 16-bit common bus system, and data from 16-bit common bus to registers are connected like this। इनकी जो आउटपुट है वो 16 बिट रजिस्टर के ऊपर आ जाएगी, लाइन जो बस के ऊपर डेटा पड़ा है वो भी क्या है हमने रजिस्टर्स के साथ इनपुट करवाया हुआ है, ओके। एंड वी हैव अ यूनिट दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, एंड दिस इज ई फ्लिप फ्लॉप। दिस ई फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर कैरी इन केस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, okay। Now suppose memory unit has 2 signals, one is write signal and other is read signal. Read signal is used to read data from memory and place that data on 16-bit common bus system with selection variables equal to 711। अगर सिलेक्शन S0, S1, S2 की वैल्यू 111 हो जाती है, मतलब 7 के इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो 7 के इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये मेमोरी यूनिट सिलेक्ट हो गया। मेमोरी यूनिट सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, मेमोरी अपना डेटा जो है ना वो बस के ऊपर रख देगा, ठीक है। इन द सेम वे एड्रेस रजिस्टर हैज 3 सिग्नल्स। LD मींस लोड, लोड मतलब लोड मींस वी हैव टू लोड द कंटेंट फ्रॉम बस टू द रजिस्टर। इफ this register have active load signal, okay, तो क्या होगा, जो बस के ऊपर जो कंटेंट पड़े वो एड्रेस रजिस्टर में लोड हो जाएंगे, okay। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट। INR सिग्नल इज द इंक्रीमेंट सिग्नल which increment the content of address register by 1। next signal is CLR, that is a clear signal which clear the content of AR register। Now suppose in this way all the registers has these 3 signals, load, increment and clear. In output register has only one signal, that is load, and this accumulator register. This accumulator register is connected with arithmetic logic unit, arithmetic logic unit for performing various operations, ओके। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक्यूमुलेटर जिस वन ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होता है, दूसरा ऑपरेंड हमारा मेमोरी में होता है, ठीक है ना, इन दिस वे। तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो इसी तरह से होते हैं। अब क्या है कि सभी रजिस्टर्स की आउटपुट बस के साथ कनेक्टेड है और बस की आउटपुट रजिस्टर्स को इनपुट जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। Now I want to transfer data from accumulator register to data register. Now by using common bus system, how we will perform this operation. This is the
transfer operation, and in this operation we want to transfer content from accumulator register to data register. Okay, firstly accumulator register have to place its data on 16-bit bus. फर्स्टली क्या है कि accumulator register क्या करेगा, अपना डेटा जो है वो बस के ऊपर रखेगा. बट फर्स्ट accumulator register क्या होना चाहिए, select होना चाहिए. accumulator register क्या होना चाहिए, select होना चाहिए. ठीक है, and its corresponding number is 4. Okay, and we have S3, S2, S0 selection variables. Okay, if for क्या बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा वैल्यू उसकी, 7 ये बनेगा. ठीक है ना. yes sir. This means 100. If you want to select accumulator register, the selection variable should be 100. Selection variable should be 100. Okay, अगर selection variable की value 100 हो जाती है, this means we have select accumulator register. Okay, Yes sir. now accumulator register will transfer its data to 16-bit bus. अब accumulator का डेटा कहां पर आ गया, 16-bit बस के ऊपर आ गया. now अब 16-bit बस से कहां पर जाना है, डेटा रजिस्टर में जाना है. okay, we have to transfer 16-bit bus data to the data register, and data register का जो लोड सिग्नल है, LD सिग्नल, जहां पर जाना जाता है ना, जहां पर कॉमन बस सिस्टम से डेटा जिस रजिस्टर के पास जाना है, उस रजिस्टर का लोड सिग्नल क्या हो जाएगा, Yes, sir. एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो लोड रजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, तो जो डेटा होगा 16-बिट कॉमन बस के ऊपर पड़ा वो डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर? ठीक है. सर इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे? नहीं, इसका प्रैक्टिकल नहीं है. इसका क्या है कि देखो ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाइड है. वी हैव टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ accumulator टू द डेटा रजिस्टर. So firstly we have to select accumulator register with selection variable 100. Okay, when accumulator register is selected, the content of accumulator register is transferred to the 16-bit bus, and this the data on 16-bit bus we have to transfer it to data register, and data register का load signal क्या है, एक्टिव हो जाएगा. Then the data is transferred from 16-bit bus to data register. No, next is suppose if you want to transfer data from memory टू डेटा रजिस्टर. yes sir. क्या करोगे, सबसे पहले देखो हमें क्या मेमोरी का एड्रेस चाहिए होगा, तो वो हमें एड्रेस कहां से मिलेगा, AR रजिस्टर से, एड्रेस रजिस्टर से. yes sir. देखो फ्रॉम मेमोरी वेयर वी वांट टू रीड डेटा, और ऑन मेमोरी वेयर वी वांट टू राइट डेटा. मेमोरी से किस लोकेशन से हमने डेटा रीड करना है, या मेमोरी की किस लोकेशन के ऊपर डेटा हमने राइट करना है. वी नीड लोकेशन ऑफ मेमोरी ऑफ पर्टिकुलर सेल. ठीक है ना, तो वो हमें कहां से मिलेगा, एड्रेस रजिस्टर. सो दैट्स व्हाई एड्रेस रजिस्टर इज कनेक्टेड विद मेमोरी. सो दैट्स व्हाई एड्रेस रजिस्टर इज कनेक्टेड विद मेमोरी. फ्रॉम एड्रेस रजिस्टर we get the required address of the memory where we want to read the data. Okay, now we want to transfer the content from memory to data register. Firstly we need memory address, and that address we will get from the address register. एक बार हमें मेमोरी का एड्रेस मिल गया. now we want to read data from memory. we want to read the data from memory. तो उसके लिए हमें क्या है, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाएंगे. now we have to activate, control will activate the read signal. Okay, control क्या करेगा, control will activate the read signal with memory selection variables 111, S3, S2, S1. selection variables 111 है, तो रीड सिग्नल एक्टिव होगा, तो हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डेटा रीड करेंगे और इस डेटा को हम रख देंगे 16-बिट कॉमन बस.
16 बिट कॉमन बस। ये रिपीट कर दो थोड़ा। देखो इफ वी वांट रीड मेमोरी, तो उसके लिए हम मेमोरी से डेटा रीड करके हमने डेटा रजिस्टर में भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरी का एड्रेस चाहिए होगा जहां से हमने डेटा रीड करना है, तो वो हमें एड्रेस मिल जाएगा एड्रेस रजिस्टर से। नाउ मेमोरी सेलेक्ट भी होनी चाहिए। मेमोरी सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 111, ठीक है, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कौन सा नंबर है मेमोरी के, 7 है, तो अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 777 बन जाएगा। नाउ वी हैव टू एक्टिवेट द रीड सिग्नल। जब तक देखो मेमोरी सिलेक्ट हो गई, हमने क्या कर लिया, मेमोरी को सिलेक्ट कर लिया विद सिलेक्शन वेरिएबल से, ठीक है, 111 वैल्यू कर दी, मेमोरी सिलेक्ट हो गई। मेमोरी से डेटा तब तक रीड होकर बस के ऊपर नहीं आएगा जब तक ये रीड सिग्नल एक्टिव नहीं हो जाता, ये बात याद रख लो, ठीक है। मेमोरी से हमने डेटा रीड करना है तो मेमोरी एड्रेस चाहिए, वो एड्रेस हमें एड्रेस रजिस्टर से मिलेगा। तो मेमोरी को हमने सिलेक्ट कर लिया विद सिलेक्शन वेरिएबल 111, ओके। एंड जब तक मेमोरी का रीड सिग्नल एक्टिव नहीं हो जाता ना, तब तक डेटा मेमोरी से रीड होकर बस के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही मेमोरी का रीड सिग्नल एक्टिव होगा तो मेमोरी से डेटा जो है वो ट्रांसफर होकर बस के ऊपर आ जाएगा। अब जाना कहाँ है, डेटा रजिस्टर के पास जाना है डेटा, तो डेटा रजिस्टर का क्या है, लोड सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बस से डेटा ट्रांसफर होकर कहाँ पर चला जाएगा, डेटा रजिस्टर पर चला जाएगा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, ठीक है। इसको एक बार देख लो, समझ लो। अभी ये पेंडिंग है, अभी ये सारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उससे पहले मैं आपको एक पोल लॉन्च कर दूं, वो आपको उसका आंसर दे दूं, सेकंड पोल जो है। How many address lines we need in 2048 memory chip? 10, 11, 8, 12. Eight. 10. Eight. Sir, 11. 10. Anchal Sharma, 1900119. सर 10। 10. Hello, So sir. Anchal Sharma. Hello. 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 हेलो आंचल, Yes, sir. कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए हमें? Sir, 10. 10 चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट की? Sir, it's गुरकीरत सिंह। sir 11 आएगी 2 to power 11. अच्छा, गुरकीरत सिंह। गुरकीरत सिंह, Yes, sir. कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए हमें? हाउ मेनी एड्रेस लाइंस वी नीड?
सर ये नहीं पता चला कितने चाहिए। क्या कर रहे थे, पूछा भी नहीं आपने। सर वो पता नहीं चला। पता नहीं चला, वही तो कह रहा हूँ कि पूछा भी नहीं आपने तब। सर अब पूछना ये तो थोड़ी मुझे ऐसे मत बोलो ना नहीं सर। कि पूरा लेक्चर सर खत्म हो गया। ये देखो, ये चीज तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। ये आज सर का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी मैंने ये रिवाइज कर दिया सारा लेक्चर पिछला। अब आप कह रहे हो पता नहीं चला, सर पूछा मेरे भी ना नहीं थोड़ी आपने नेटवर्क फिर। सर मेरे ना थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण मेरा बार बार ना रिकनेक्ट हो रहा था। सर वो अच्छा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर 11 था। फिर वो चेंज नहीं ना होगा, अब जो सबमिट कर दिया वही रहेगा। यस सर। 2 raised to power 11 जो भी इसकी वैल्यू होगी पावर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड एड्रेस लाइन। ठीक है, यस सर। चलो कर लिया पोल सभी ने? यस सर। जी सर जी। कर दो एंड। यस यस सर। सर जी कर सर। दो। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि कुछ जो रजिस्टर तो हमारे 16 बिट है। फॉर एग्जांपल डेटा रजिस्टर, accumulator register, instruction register and temporary register. These 4 registers are of 16 bit. तो हमारी जो common bus system, it is also 16 bit common bus system. So this means total number of bits equal to total number of lines. Clear? But few registers like address register and program counter registers, these 2 registers are of 12 bit registers. तो ये क्या करेंगे, जो हमारी 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी ना, उनमें 0 इंसर्ट कर देंगे। जैसे 0 टू, ये 12 बिट्स है तो 0 to 11 एड्रेस रजिस्टर एड्रेस आ जाएगा लाइंस के ऊपर। तो बाकी की जो 4 बिट्स बचती हैं उसमें क्या हो जाएगा, 0 इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ठीक है ना। देखो क्या है कि हमारी जो लाइंस है, कॉमन बस सिस्टम लाइंस जो है वो 16 बिट की हैं। जैसे एड्रेस रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस रजिस्टर, ये क्या है, इट इज ऑफ 12 बिट रजिस्टर। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स होंगी ना, लास्ट वाली 4 बिट्स है ना, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 0 इंसर्ट हो जाएगा। 0 to 11 बिट्स आर यूज्ड फॉर एड्रेस एंड 12 to 15 बिट्स जो है उसको, उस पर हम क्या करेंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे। इन द सेम वे इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर विल यूज लीस्ट 8 सिग्निफिकेंट बिट्स। ठीक है, 8 सिग्निफिकेंट बिट्स कौन सी होती हैं, 0 to 8। ठीक है, उसमें क्या है, डेटा आ जाएगा एंड हायर 8 बिट्स जो होंगी 9 to 15, उसमें क्या आ जाएगा, 0 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे 16 बिट्स जो है वो ऑक्यूपाई होंगी टोटल। यस एंड सर। हियर वी हैव अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। This arithmetic logic unit is used for performing various arithmetic and logic operations. Okay, and the output of arithmetic logic unit goes to accumulator register. अब accumulator register में क्या 3 तरह के inputs जा रही हैं, arithmetic logic unit पर क्या 3 तरह की inputs जा रही हैं। One input from data register, another from accumulator register, another third one is from input register. ठीक है, फर्स्ट जो है एक्यूमुलेटर की इनपुट एक्यूमुलेटर में ही जा रही है एंड दिस इनपुट इज फॉर ऑपरेशंस लाइक सीएमए। हम करते हैं ना, सीएमए का मतलब कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट्स का हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो क्या है कि इसकी और रिजल्ट भी हमें एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। इसमें क्या है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को हमने यूज किया, उसके ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन वी हैव टू स्टोर द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यस सर। अनदर इनपुट टू द ALU फ्रॉम डेटा रजिस्टर, दिस input is used for performing operations like add and subtract. ठीक है, one operand is from data register and second operand is from accumulator register. Perform the addition and store the result in the accumulator register. If there is any carry after performing arithmetic operations, if you have any carry, that carry will store in E flip flop. ठीक है, Yes, sir. तो ये हो क्या हो गया, अगर हमने 2 ऑपरेंड्स को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर दैट पर्पस वी यूज डेटा रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड रिजल्ट स्टोर्ड परफॉर्म ऑपरेशन एंड द रिजल्ट विल स्टोर्ड इन द accumulator register. And third input is from input register. Always
whenever we press a key from the keyboard, firstly it goes to the accumulator register. तो हमेशा ही क्या है कि accumulator register के पास ही जाती है. अगर input register, when we press a key from the keyboard, it will go to the input register. From input register, it will go to the accumulator register. ठीक है? So this in this way, accumulator register has three inputs. First is from accumulator itself. Second input from data register for performing various operations like add, subtract, and another the last input to the accumulator register is from input register. ठीक है? एक और चीज याद रखना, if I want to perform operations, let us suppose if I want to perform operations, add operation with the content of memory and accumulator register. If I want to perform operations between the content of memory and accumulator register, मैं क्या चाहता हूं, मेमोरी के कंटेंट्स और accumulator के कंटेंट्स दोनों को ऐड करना चाहता हूं और रिजल्ट accumulator में ही स्टोर करना चाहता हूं. बट इसमें क्या है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट ये कोई कनेक्शन नहीं है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि डायरेक्टली मेमोरी के कंटेंट्स जो है उसको हम क्या है कि सीधा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास में ही दे सकते हैं. फर्स्टली हम क्या करेंगे, मेमोरी के कंटेंट्स और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हम मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मेमोरी के कंटेंट्स का और एक्यूमुलेटर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है ALU का. तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली वी हैव टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डेटा रजिस्टर ऑफ डेटा रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर रजिस्टर. ठीक है? मेमोरी के कंटेंट्स और एक्यूमुलेटर के कंटेंट और ALU के साथ कोई डायरेक्शन परफॉर्म करना होगा तो फर्स्टली वी हैव टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डेटा रजिस्टर एंड देन वी विल परफॉर्म एनी ऑपरेशन. सर अब अपनी बात पूरी रिपीट करना, इंदर बोल पड़ा था बीच में, पता नहीं चला. अच्छा देखो, एक मैं बोल रहा था कि अगर मैं चाहता हूं मेमोरी के कंटेंट्स और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स दोनों को ऐड करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली इन दोनों के कंटेंट्स को ऐड नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेमोरी का जो कनेक्शन है वो ALU के साथ डायरेक्टली है ही नहीं. देखो मेमोरी अपना यूनिट क्या करेगी, डेटा तो बस के ऊपर रख देगी. अब देखो यहाँ से बस से कोई ALU को कनेक्शन जा रहा है, नहीं जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली. तो इससे हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि फर्स्टली वी हैव टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डेटा रजिस्टर. मेमोरी के कंटेंट्स बस के ऊपर रखें, बस के से कंटेंट डेटा रजिस्टर के ऊपर जाएंगे और डेटा रजिस्टर के कंटेंट बाद में क्या है ALU के पास जाएगा और एक्यूमुलेटर दोनों में ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में फिर से वापस जा सकता है. डायरेक्टली मेमोरी और एक्यूमुलेटर में बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. ये याद रखना, डेटा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है बना हुआ. ठीक है? इस डायग्राम में. तो इसलिए हमें पहले क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू ट्रांसफर द कंटेंट फ्रॉम मेमोरी टू डेटा रजिस्टर एंड देन वी हैव टू परफॉर्म arithmetic operation or it is a logical operation. We cannot perform operations with the memory unit and accumulator unit directly. Firstly we have to transfer the data from memory to data register and then we have to perform various arithmetic and logical operations. ठीक है? क्लियर? तो एक बार पढ़ना, अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे बता देना, मैं आपको ये रिवाइज कर दूंगा. जो PPT में आपको सेंड कर दूंगा और इसका जो नोट्स है यहाँ तक कॉमन बस सिस्टम तक के वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा. उसको एक बार पढ़ना जरूर और नेक्स्ट लेक्चर में ये मुझे बता देना कि कोई डाउट है, कुछ नहीं पता चला तो आप मुझे कुछ बता देना. ठीक है सर? नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे लगेगा कि ट्यूसडे नो? सैटरडे ट्यूसडे को लगेगा. सैटरडे को हमारा कोई लेक्चर नहीं लगेगा. सैटरडे को मैं वैसे ही नहीं सैटरडे को मैं वैसे ही घर से ही जूम के ऊपर ना एक आधे घंटे का लैब का पार्ट जो है वो मैं आपको बताना है मैंने. ओके सर. ओके वो मैं आपको बता दूंगा. तो ठीक है, तो ये इसको पढ़ लेना. कोई डाउट है नहीं पता चले तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास स्टार्ट करने से पहले हम वही डिस्कस करेंगे. ठीक है जी? ठीक, थैंक यू सर. तो तब तक गुड बाय, स्टे होम. थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर.